trade union leaders of our country, the General Secretary of the HMS, our beloved Comrade HARBHAJAN Singh Sidhu. He is known to all the workers in this country, and today he is leading the united struggle against the anti-people, anti-worker policies of the government, and we are very happy to have him with us. And this seminar is part of our month-long seminar program to celebrate the public sector character, nationalization of banks in our country. And today, when there are attacks on our public sector, on the nationalized banks, and on every public sector undertaking in our country, this seminar is very important, and that is why we have invited very eminent senior leaders to speak to us. And I'm very sure today, with his vast experience in our trade union movement and with the current struggle that is leading, his speaking to us will be highly useful, educative, and also inspiring to all of us. He is a militant leader, he is a fighter, and that way we are very happy to have him with us. And to coordinate today's program, we have Comrade Rajneesh Gupta, our young leader. He is the Central Committee member of the AIBEA. He is the Deputy General Secretary of our Uttar Pradesh Bank Employees Union. He is also the All India leader of All India Bank of Baroda Employees Coordination Committee. And I am very happy that we have Comrade Rajneesh Gupta as coordinator. I request Comrade Rajneesh Gupta to coordinate and to welcome our chief guest today. Over to Comrade Rajneesh Gupta. AIBEA President, our leader, Comrade Rajan Nagar. The veteran leader, our guest speaker today, Comrade HARBHAJAN Singh Sidhu. He is General Secretary of HIND MAZDOOR SABHA, General Secretary of AIBEA, Comrade C.H. Venkatachalam, our beloved leader, and all the office bearers of All India Bank Employees Association, and also the participants of this webinar program. It is a happy moment for me to welcome all the participants who are participating in this webinar program today. We all know that we are celebrating the 52nd anniversary of nationalization, of banks nationalization. And the very purpose of this is to continue the campaign against the attacks on public sector banking. Government is trying to privatize the banks. For this purpose, to let our people know, AIBEA has arranged a month-long program so that our people, our cadre can understand the importance of the nationalization, and daily we are deliberating, the great leaders of our country are deliberating on different subjects, topics and issues, etc. Today, in the sequence of month-long program, today is the 15th day. As we all know, the privatization of banks is not the isolated agenda. Government is intending to privatize each and every sector. As they say, government has no business to do business. So under that, they are doing the privatization program. Yesterday only, in one meeting, our finance secretary said, no bank will remain public sector bank, only a few banks will remain public sector bank. Although then he said that is a
unofficial announcement. So with this, it is needed to understand the total scenario. We, as an AIBA soldier, we are proud that AIBA has fought always for the nationalization of bank prior to 1969. When banks were privatized, AIBA was the fighting force behind that. And still I remember, as I come from Kanpur, Comrade SM Banerjee, who was the MP of CPI party for so many decades, for 2-3 decades he remained MP, and he raised the voice of working class in the parliament. In the parliament, he was raising the voice. Outside, he was also raising the voice. And I can say that he was always available for working class of Kanpur, even when he was taking the lunch. So, everybody knows that public sector bank is not only needed for employees, is not only needed for employment. Public sector banks are really helpful in upgrading the farmers, in helping the poor, in helping the small shopkeepers, and so many capital-less people who have come up due to this public sector banks. So, AIBA wants that all of us to be prepared for a bitter struggle to fight against, which is going to be fight against the privatization of banks. I am happy that almost all the trade unions, central trade unions, are supporting our struggle, and Comrade HARBHAJAN SIDHU, being the leader of HMS, he is also playing a very important role. He is a senior trade union leader. He is a militant leader. He fought so many battles in his life. I am happy that he is with us today in our webinar program. And the topic of today's program is public sector is public sector. Don't sell it off. So I welcome Comrade HARBHAJAN and I invite him to speak to all of us with this. Thank you very much. I welcome you, Comrade HARBHAJAN. Over to Comrade HARBHAJAN. Thank you. Thank you, Comrade Rajneesh Gupta, coordinator of the today webinar organized by the All India Bank Employees Federation, Comrade President of the AIBA, Comrade Venkatachalam, General Secretary of the AIBA, and all other important office bearer of the AIBA. First of all, I congratulate all the leaders and rank and file of the AIBA who discussed among themselves and decided to have a 1 month long webinar. In that webinar, I have seen last 15 days, you have invited a very important personality of country of different sectors, advocates and retired IAS officers and other professors, and they have given a very good lecture on this webinar. And on the outset, I would like to thank All India Employees Association for providing me an opportunity to share my viewpoints with you. Comrade, we are actually, when you are organizing this 1 month seminar, you know very well the Indian trade union movement is passing through a very critical phase. Because I had an experience when before emergency in 1974, because I belong to my parent organization, All India Railwaymen Federation.
At that time, I was quite young, 22 years old. We were fighting with the government to achieve the bonus demand and other equal work, equal pay. But at that time, we decided to go on for indefinite strike from 8th May 1974. But the then Prime Minister, late Srimati Indira Gandhi, decided to crush our that movement. And I was arrested in a different sabotage and criminal cases, sent to jail. I was quite 22 years old and removed from service. And during emergency, there is no chance to get the acquittal from the court of law. I was fighting in the court, and ultimately, when the emergency lifted and election were declared, and then my advocate take up this issue in the session court, then I acquitted on both the charges of the police framed against me of the criminal charges. Then again I reinstated, then again removed from service for 4.5 years and complete my entry banned in the Indian Railway. And I got a time to organize the working class. Then ultimately, after a long time, management and Ministry of Railway realized that we cannot crush the movement of the labor, working class employees. And ultimately, they reconciled with me. Now I am a General Secretary of the MAZDOOR SABHA since 2012, after the retirement of my predecessor, COMRADE. And you have done a wonderful job. You, at this moment when undeclared emergency is going on, and government has already decided to wind up all the government as well as public sector and hand over to the multinational as well as to the private sectors. And during these days, you have decided to ultimately organize the rank and file and also give awareness to the countrymen what government is going to do. Because you are on this occasion, you are celebrating your 52nd anniversary of the nationalization of banks. And second is the 75th anniversary of the most prestigious, enlightened, relentless fighter, strong and responsible association of the country, that is All India Bank Employees Association. And on to these occasions, you organize 1 month. That is a very big, because we are also organizing seminar, but 1 or 2 days seminar was enough for us. But you are continually 1 month organizing and inviting all the leaders from different sectors to place their viewpoint. Brother, time is very bad for the working class because the ruling party is working for only multinational as well as big corporate houses. And government has already decided, I have no doubt. And when the finance minister addressed to the nation while declaring 20 lakhs package for COVID victim, majority of that for the employer and big corporate houses. For workers, they have not even given a single penny to the working class. On that day, I was very cautiously listened to finance minister. She said that my government has decided to wind up all PSUs. And for example, she has mentioned that if we have 10 PSUs, we will reduce to 4. And 6 PSU we will privatize. It means 40% they will remain with them, and 60% PSUs they will hand over to the multinational as well as to the big corporate houses. Because if you can see the decision of the government has decided to hand over 41 ordnance factories, where near about 80,000 workers are working. They have decided to corporatize. Orders have been issued. The Ordnance Factory Board has been dismantled, and they have announced merged into 7 companies. And now that company will be registered under the Company Act,
their share will be in the market. Side by side, they have also increased the FDI in the defense sector from 49% to 74%. And accordingly, they will, those who will purchase the share of that 7 companies, more than 51%, they will be the owner of those entire 41 ordnance factories. Now you can see the government decision. And similarly, they have decided to hand over 500 blocks of the coal mines to the multinational as well as to the big corporate houses. And big corporate houses we know very well. They are limited. We can count on fingers. Mukesh Ambani, Gautam Adani, and Vedanta, and like that. And in the coal sector, they have decided to invest 50,000 crore rupees for creating infrastructure for the private sector as well as to the multinationals, so that they can earn money from the coal sector and get away from our country. And as accordingly, they have also decided that entire Indian Railways, they have already reduced the member board, and they have changed the designation of the chairman of the railway board to the CEO and comes chairman. And they have also reduced the 150 officers from railway board. They have transferred to the other sector, other division and zonal railways. And they have decided, and orders have been issued to hand over 109 trains, important train, on 151 important sections to be handed over to the private companies or multinationals. And they have also decided to hand over 7 production units of the Indian Railways, those who are producing locomotives, world-class coaches, axle plant, and other so many Patela components workshops. They have decided to hand over 7 production units of the Indian Railways to the multinational as well as to the big corporate houses. And side by side, they have also confidential order they have issued that in Chittaranjan locomotive, the infrastructure we have within the departmental, we can manufacture more than 1,000 locomotives per year. But now they have given the restriction that you cannot exceed 250 locomotives. And 250 locomotives, they have already offload in the private sector. They manufactured and brought them to the inside the workshop of Chittaranjan locomotive. There only they assembled and put the Indian Railway, made in Indian Railways. And similarly, in the Kapurthala coach factory, they have also allowed private corporate houses to work inside the workshop. And similarly, they have also decided to give the order to the GE means one of the biggest company of the America, to supply us 1,000 locomotives per year of diesel locomotives. That's why we are writing that this government is doing anti-national work. They have given under the pressure of American government, a former friend of our respected Prime Minister, Donald Trump, they pressurized the Indian government to give order diesel locomotive to the GE companies, because now diesel is phased out. Steam has already been phased out. Now diesel has been completely phasing out, and we need electrical locomotives and much more higher horsepowers. But now government has given under the pressure, because we are creating pressure on the government. What 1,000 diesel locomotive we will do for that? Then they have given a notice to GE that please change this order. We are going to cancel this order because diesel we don't want. Then the American government create a pressure on our government. No, nothing doing. This is my company. You cannot in the midway change the order. And now you can see the government decision. They allow GE to give us 1,000 locomotives of diesel locomotive. And similarly, they are also decided to hand over 76
public sector undertaking which was identified the planning commission, and list has been already issued. And you can see the BSNL and VSNL and Bharatiya Petroleum, all profit-making companies, they are handing over on throwaway prices. And under these circumstances, because they have already announced they will reduce the bank, and they have issued the order to merge 10 important banks and reduce to 12. And during this merger, as a layman, as a customer of the bank, I am watching that my staff is telling to me there was a huge rush in the bank. Staff strength is near about 50%, and workload is more than four times maximum workload they have allotted to the staff. But now staff is puzzled. There is no posting and other thing dealing with the customer and customer complaining. I am one of the complainant of against the bank, Punjab National Bank. But what their manager is saying that, brother, how we can manage these four bank merge into our banks, and staff is near about 50%. How we can handle such type of customer? This is a very serious affair, and through this your webinar, this is a record, permanent record, and this will be useful for us in sometime in the evidence. In the evidence, whenever this chance will come to place our evidence, and this government is not listening to us. And apart from this privatization, and during this pandemic, our Prime Minister, respected Prime Minister, advising all the countrymen that this pandemic may be utilized for your achievement. You can achieve during this pandemic, and people are achieving. Those who are very close to the government, they have increased their wealth and becoming a richest man of the Asia, Mr. Mukesh Ambani, and second richest is Gautam Adani. And you can see the entire port and dock of the country. They have not disturbed the big port and dock. They have started small port and transfer entire regular work to the small port. And now in Bombay, Jawaharlal Nehru Port, there is no work. Staff is sitting idle. And entire work they have transferred to the small ports. And small ports are controlled by this our respected brother Gautam Adani. And Gautam Adani, during this pandemic, he successfully captured the 6 airport, important airport. Public taxpayer money, government invested in those airport for improving the standard of those airport at an international level. And slowly during this 1.5 year, the entire 6 airport they have handed over to the important airport to the Gautam Adani. And Gautam Adani, if you can see the record, he has no experience even a 1 hour to control the international airport. But our government is so friendly with them. They are handing entire our country to 2-3 people. And now I know very well that AIBA is a militant organization and leading by a very strong headed leaders like our brother CH Venkatachalam and all of you. And I hope that you are very strong. You are handling and you are started protesting against the anti-employees decision of the government. And you have a record for go for agitation and demonstration and even strike 1 day or 2 days. But nowadays, government has already stopped everything, because during this pandemic, this is our problem. We have decided to close down entire country for indefinite strike. But entire railway they have already closed down from last 1.5 years. Nobody can think over that the Indian Railway we were running 25,000 train in a day, and 2.5 crore people always sitting in the train traveling in a 24 hours. 10 lakhs get down and 10 lakhs add in that. But now from last 1.5 years, entire passenger mail, express, suburban, Shatabdi, all were stopped. Only goods train is working.
And where we will stop the Indian Railway working, because there is already from 1.5 years the government has decided to close down the Indian Railway. What is the purpose of that? They wanted to declare Indian Railway as a sick industry, and then they will dismantle entire the Indian Railways. And this is a public utility service, and public utility service government should not hand over to the private operators, and they will charge you. You can imagine if Gupta ji belongs to Kanpur, that Shatabdi Express from New Delhi to Kanpur, they are charging only, the departmental rate is only 800, and the private companies are charging 1600 and 1700, and there is no difference, only 15-minute difference from Delhi to Kanpur or Lucknow. But they are handing over all the 109 important train to the private companies, and they have decided to even hand over 600 railway station to the private companies for in the name of development of these stations. And one example I can quote, that one station Habibganj next to the Bhopal, they have decided to hand over Habibganj to the one private company by open bidding. And that station they have given in 350 crores for 46 years. Then that gentleman approached to the previous railway minister and approach him to increase this, because we will not earn within the 46 years. Then our railway minister kind enough to increase the lease from 46 to 99 years. Now, who gave them this mandate? To hand over entire our country assets to the private operator. 99-year lease. Who will be survive after 99 years? Nobody knows. God knows about that. But they have hand over the Habibganj to the private company. Now they are in a process to have a bidding of the New Delhi station, Nizamuddin station, Delhi station, Allahabad, Lucknow, all other 600 station. They want to 23 station, already bidding is going on. And this mandate nobody given to this government to sell out entire our country to the multinational as well as to the selected corporate houses. This is our serious problem. We are facing all the center trade unions from last 10 years. We 10 center trade unions join hand together, and we have a common agenda of 10, then increased to 12 point charter. And we had a very successful 5 strike during UPA government. And this government, we had a 5 successful national strike during this Modi government. And I am very happily to mention here that I have first time seen that 3 days complete strike in the entire coal mines, when this prime minister decided to inaugurate the bidding of that 500 blocks. Same day, the 5 central trade unions decided to go for a 3-day strike, complete strike. In spite of all government efforts, they cannot break our strike. And if you can see the defense 3 federation, including 2 other federation, 5 federation decided to go for indefinite strike and complete 5-day strike. After 5-day strike, then they started reconciliation. Now they also betrayed that reconciliation, and now they have decided what the agenda of this government. This is a very sad affair that 41 ordnance factories manufacturing the country gun and top and golas and other ammunitions, and they have handed over that companies to the multinationals and other big corporate houses. And similarly, they have decided, because before 42 years, before 52 years, there was at that time pressure of the multinational and the local corporate houses that all entire banking system should run by the private entrepreneur, public money and used by the private men. And on those days, I know entire country demanding that the bank should be nationalized, and AIBA also taken a lead of that. And ultimately, that time, that government decided to nationalize the entire banking system, because banking system, public bank system, you helped a lot. I can mention few points.
because the resources of the public bank should be utilized for the welfare of the common people. Some enlightened people, including ABA, raised the issue of the nationalization that I have already mentioned. Ultimately, in 1969, the then Prime Minister Indira Gandhi decided to nationalize the bank. The decision was challenged in the court, which did not reverse it. Subsequently, 4 more private banks were nationalized. This decision changed the scenario of the nation. The public sector banks opened after their branches in the rural and remote area, which were totally ignored by the private banking system. People from backward and tribal areas started taking benefit of public sector banks, and public sector bank various small saving schemes to motivate public in general to start banking. The government also launched various schemes for rural, tribal, and backward citizens of the nation. Thus, the banking sector widened its outreach and also provided a decent employment to thousands of youth unemployed of the nation. These important work our public sector banks are doing, but the banking network reach across the nation. A section of the big corporate houses was not happy with this development and started lobbying for change the decision of nationalization of the bank, and they succeeded in their attempt to certain extent in 1991. You might be remember. Please kindly remind me up to, because you have allotted me 45 minutes. I can try to complete my lecture within 45 minutes. Or if you give me extension, then I can also place. No problem, sir. And thoda Hindi maybe. Okay. Thank you. Thank you, sir. Actually, ये जो पूंजीपति हैं, उनको कामयाबी मिली, कब मिली? 1991 में. At that time, the government, Congress government was in power, and that time our Prime Minister, respected late Narasimha Rao, and our finance minister was Dr. Manmohan Singh. And that time government decided to liberalize their policies, and they have decided to join the WTO, and they have liberalized all their policies, and they have introduced new economic and industrial policy. And we were fighting against that new economic and industrial policy because they have open border. And at that time, what they were saying that why you are stopping multinational will come, they will start new business, new factory, they will give employment to the unemployed youth, our country, and our all citizens will increase their monthly earning, and per capita income will increase, our country will developing to develop. These words were explained by the government official to the all nation. But what we have seen from last 30 years, and from that day, since 1991, the matter started, और अभी 91 से लेकर 30 साल में जॉब मिलना तो बहुत ही असंभव सा हो गया. जिनके हाथ में डिसेंट जॉब है, वो गवर्नमेंट की इस पॉलिसी के तहत वो हमारे हाथ से जा रही है. अगर आपने देखा होगा कि उनके चलते उन्होंने डिसाइड किया था कि 10% इन्वेस्टमेंट करेंगे, डिसइन्वेस्ट करेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम पर. बाद में जो NDA 1 आई, हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी उस वक्त प्रधानमंत्री बन गए, उन्होंने उस 10% को इंक्रीज करके 40% कर दिया, और उन्होंने अपने टाइम में गवर्नमेंट हमारे देश की 40% प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्रीज को बेचने का काम किया. रिमेनिंग 60% करना चाहते थे, परंतु उनके पास टाइम नहीं था, इसलिए वो बीच में मिडवे में छोड़ गए. और बाद में दूसरी गवर्नमेंट भी आई. हमें तकलीफ इस बात की है कि जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो वोट तो हमारे से लेती हैं ये देने के लिए कि हम आपके 2 हाथ को काम देंगे, हर सिर को छप्पर मिलेगा, मकान मिलेगा, तन को कपड़ा मिलेगा, बच्चों को पढ़ाई मिलेगी, और ओल्ड एज में मुफ्त बीमारी का इलाज होगा, और रहने के लिए अच्छे मकान मिलेंगे. ये सब सपने तो दिखाए जाते हैं, परंतु पावर में आने के बाद वो सारी फाइलें, सारे मैनिफेस्टो बंद कर दिए जाते हैं, और अपना एजेंडा शुरू कर दिया जाता है कि किस तरीके से थ्रो अवे प्राइस में
आपको याद होगा, अगर आप थोड़ा सा बैक जाएं तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पर हमारी बाल्को कंपनी बिकी थी, और बाल्को कंपनी को एक मल्टीनेशनल ने खरीदा था। 3 महीने हमने हड़ताल करी थी, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, एक हमारे साथी ने बिट्रे किया, तो उसको 525 करोड़ रुपए में बाल्को को बेचा गया था। और बाद में इंडिपेंडेंट एजेंसी ने उसको जो उसकी एवेल्युएट किया, वो 8,000 करोड़ रुपए की एल्युमिनियम फैक्ट्री बाल्को, इंक्लूडिंग लैंड एंड क्वार्टर्स एंड प्लांट, वो उन्होंने 525 करोड़ रुपए में हैंडओवर किया था। ऐसे बेवकूफ नहीं थे कि वो 525 में उन्होंने थ्रो अवे प्राइस पे फेंक दी, अंडर द टेबल जो लिया वो उसका बराबर उन्होंने किया। सिमिलर वे में मॉडर्न फूड इंडस्ट्री के 22 प्लांट्स इंडिया में थे, जिसको 102 करोड़ रुपए में बेच दिया गया था। सारे ट्रेड यूनियन ने मिलकर तय किया प्रधानमंत्री को मिला जाए और प्रधानमंत्री को बताया जाए कि देश को क्यों लुटा रहे हो। तो उन्होंने तय किया कि अमरामल पुरोहित, क्योंकि कुछ उनके क्लोज रिलेशन थे, वो वाजपेयी जी को जाकर बताएं कि भाई ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने जो शब्द बोले थे वो अभी भी मुझे याद है कि अमरामल पुरोहित, कौन से हिंदुस्तान की जमीन जो है वो बाहर चलेगी, मुझे वो नाम बताइए। तो उन्होंने कहा साहब ये 22 प्लांट जो हैं वो 102 करोड़ में आपने बेच दिए, जो दिल्ली का लॉरेंस रोड का प्लांट है इनका वो 200 करोड़ रुपए से ज्यादा है एक प्लांट। तो तब उन्होंने एक कमेटी बिठाई, उस कमेटी ने उसको 147 करोड़ रुपए में वो 22 प्लांट उनके हैंडओवर कर दी। तो इस तरीके से जो बची हुई चीजें थी वो अभी, क्योंकि पिछली 10 साल के कांग्रेस के रूलिंग में हमने भी बहुत, देश में हम भी इसके हिस्सेदार हैं कि उनको बाहर निकालने में। और ये गवर्नमेंट जो जिन्होंने जो वायदे किए थे हमारे देश के नागरिकों के साथ कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख हर एक के बैंक में आ जाएगा, जनधन अकाउंट भी आप लोगों ने बड़े डे एंड नाइट काम करके सारे बैंक के कर्मचारियों ने खोल दिए करोड़ों में, और अभी तक इंतजार कर रहे हैं लोग बाग के उसमें पैसा कब आएगा। और 2 करोड़ नौकरी तो परे रह गई, जो हाथ में लगी हैं वो भी जा रही हैं। और हमारे जो रिस्पेक्टेड लीडर हैं उस पार्टी के, वो कहते हैं कि वो तो इलेक्शन टाइम पर ऐसे जुमले बोले जाते हैं, वो तो एक वन ऑफ द जुमला था, वो चला गया उसके साथ। और इन्होंने, ये कोई मैंडेट नहीं था, इन्होंने ये कहा था कि हम ब्लैक मनी वापस लाएंगे। वो आपको मालूम है कि वो ब्लैक मनी जो है अभी तक की हाईएस्ट हो गई स्विस बैंक के अंदर। और इसी गवर्नमेंट के माननीय मोदी जी जो कहते हैं ना मैं खाने दूंगा ना खाऊंगा, सिर्फ खिलाऊंगा कुछ चंद आदमियों को, उसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं है। बाकी जो जितनी भी कैपिटल इंक्रीज हुई है, लोगों का पैसा, काला धन वहां पर, वो इन्हीं की गवर्नमेंट के टाइम पर हुआ है। आज तक इन्होंने कोई लिस्ट जारी नहीं की है, वो पैसा कब आएगा। हमें तकलीफ इस बात की है कि हमारे को कोई पढ़ा लिखा अर्थशास्त्री समझाए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा, तो हम समझे, परंतु एक अनपढ़ बाबा जो लाला बन गया रामदेव, वो देश को अर्थशास्त्र पढ़ा रहा था कि इतना पैसा आ जाएगा, इतने हमारे हॉस्पिटल खुल जाएंगे, इतने एम्स खुल जाएंगे, इतने रोड बन जाएंगे, इतनी मकान बन जाएंगे, लोगों को 50 साल तक कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, रामराज आ जाएगा। तो अभी वो बाबा रामदेव जो है वो लाला रामदेव हो गया, जो कि बड़ा टीवी के ऊपर मजाक उड़ाता था कि ये फटी हुई जीन्स बच्चे पहनते हैं, आज वो जीन्स भी बना रहा है। आज वो दुनिया की कोई चीज नहीं है जो उसको ना बना रहा हो, और उसका टारगेट है कि मैं 1 लाख करोड़ की अपनी बैलेंस शीट बनाऊंगा। और आज वो, मेरे को जहां तक ध्यान है, वो 30,000 करोड़ रुपए की बैलेंस शीट उसकी पहुंच चुकी है, और इसी तरीके से 3 साल के अंदर वो 1 लाख करोड़ की बैलेंस शीट बनाएगा। और वैसे खड़ाऊ पहनता है और गेरुए कपड़े पहनता है, बाबा बोलता है अपने आप को। ऐसे साथी हमारे देश को अर्थशास्त्र पढ़ाएं तो वो देश कहाँ जाएगा। और दूसरी तरफ हमारे देश की सरकार जो उन्होंने वायदे किए, उन सारे वायदों से बिल्कुल बैकआउट हो गए। और ऐसा हमारे ऊपर, वर्किंग क्लास के ऊपर, जो वो कहते थे जब मोदी जी ने शपथ ली थी, अगर आपको याद होगा, अपने पीठ के पीछे शर्ममेव जयते का बोर्ड लगाया था, और उन्होंने अपने शब्दों द्वारा इतना जबरदस्त हमारे को नवाजा था कि ये देश के निर्माण करता है। और ये निर्माणकर्ताओं का आज 44 श्रम कानूनों को बिल्कुल मर्ज करके इन्होंने 4 कोड में ले आए। अब वो जो 4 कोड आए हैं, जिस दिन देश में लागू होगा, इतना जबरदस्त अनरेस्ट होगा कि जो कोई भी गवर्नमेंट संभाल नहीं पाएगी उस चीज को, क्योंकि उसमें उन्होंने आवर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बढ़ा दिए हैं, इंस्पेक्शन बिल्कुल लेबर मिनिस्ट्री की खत्म कर दी है। और जैसा कि आपको तो मालूम है, क्योंकि आप, यू आर द लीडर, और बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, जो हमारा जो श्रम कानून इन्होंने मर्ज किए हैं, उनको 4 कानूनों में लेके आए हैं, उसमें इन्होंने जितने भी वायलेशन ऑफ लेबर लॉज के ऊपर, लेबर मिनिस्ट्री की इंस्पेक्शन के ऊपर अगर किसी व्यापारी को पकड़ा जाता था, इंडस्ट्रियलिस्ट को, तो उसमें फाइन और इम्प्रिजनमेंट दोनों थे। अभी इन्होंने उसको
जो है उनको इतना लाइट कर दिया है कि वो एक छोटे से अदने से अधिकारी को थोड़े से लिफाफे में पैसे देकर और अपनी जान छुड़ा सकता है, परंतु इन्होंने इंस्पेक्शन खत्म ही कर दी है। जो ILO का कन्वेंशन है 81 के हर फैक्ट्री के अंदर इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू स्टार्ट द इंस्पेक्शन पीरियोडिकली ऑफ दैट फैक्ट्री, कि वहां कोई वायलेशन नहीं हो रहा है। अभी इन्होंने पिछले 3 साल से उसको बिल्कुल खत्म कर दिया है। और आप जैसे जानकार हैं, आपको मालूम है कि सिंस 91 जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने लिबरलाइजेशन शुरू किया था, उसमें कॉमा फुल स्टॉप ना कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में लगा, ना उनकी कैबिनेट में लगा, ना पार्लियामेंट में लगा। उन्होंने एक ऑर्डर इशू किया था जो आज भी स्टैंड करता है, there is a complete ban on creation of new posts in the government sector as well as in the public sector. That order is still stand, and not only that, 3% annually surrender. और जो ऑफिसर सरेंडर 3% नहीं करता है उसको एडवर्स CR मिलती है, जो 3% सरेंडर करता है उसको उसके एनुअल डे के ऊपर उसको बाकायदा इनाम मिलते हैं, उनकी बहुत तारीफ होती है, उनको अच्छी पोस्टिंग मिल जाती है। तो इस वजह से हमारे देश में 91 से लेकर अभी तक, मेरे को जहां तक अपनी गणित का मालूम है कि वो मोर देन 50% स्टाफ सरेंडर हो चुका है। उनके रेगुलर काम को हमने प्राइवेट कंपनियों को, गवर्नमेंट सेक्टर में 60% वर्क जो है, रेगुलर वर्क जो है वो हैंड ओवर हो गया प्राइवेट कंपनियों को, और ओपनली वायलेट हो रहा है विद द कन्नाइवेंस ऑफ गवर्नमेंट। वो 12 घंटे काम ले रहे हैं, मिनिमम वेज भी नहीं दे रहे हैं, और चोट लगेगी कोई कंपनसेशन नहीं। कॉन्ट्रैक्टरों के ऊपर 4-5 कॉन्ट्रैक्टरों के नाम से वर्करों को उसमें यूज किया जाता है, उनके नाम लिखे रहते हैं, और अगर चोट लग जाएगी तो उसको फेंक देते हैं, उसका नाम भी काट देते हैं, हमारा एम्प्लॉय नहीं है, ठेकेदार का एम्प्लॉय है, उसको कोई लेबर लॉज का कहीं पर प्रोटेक्शन नहीं। और अभी ये जो 4 लेबर लॉज बने हैं, गवर्नमेंट कहती है कि यूनिवर्सल लेबर लॉज हैं, परंतु ये यूनिवर्सल झूठ बोलती है। हमने उनको 10वीं दफा मिनिस्टर के मुंह पर कहने का काम किया कि इसमें मोर देन 50% लेबर इसमें इन्वॉल्व कवर, जो उसका जिसका आउटर्न जो है वो मेरे ख्याल से करोड़ों रुपए में होगा, वहां पर कोई इंस्पेक्शन नहीं होगा। वो एम्प्लॉयर का सेल्फ सर्टिफिकेशन जो है वो उसका पेट भर देगा, वो एक लाइन पर लिख के भेज देगा कि आई एम इम्प्लीमेंटिंग ऑल लेबर लॉज इन माय फैक्ट्री, दैट्स ऑल। उसको वहां पर कोई इंस्पेक्शन नहीं होगा, कोई उसको चेक नहीं करेगा, वहां पर यूनियन नहीं बन सकती है। जो नॉन पावर यूनियन है उसको 20 से बढ़ाकर 40 कर दिया है इन्होंने, कि 40 जहां पर नॉन वर्किंग वाली फैक्ट्री होगी कोई लेबर लॉज उसमें लागू नहीं होगा। और कॉन्ट्रैक्टर के लाइसेंस लेने के लिए इन्होंने 20 से 50 एम्प्लॉय बढ़ा दिए हैं, कि जिस कॉन्ट्रैक्टर के पास 50 एम्प्लॉय से कम काम करेंगे, देयर इज नो नीड टू टेक एनी लाइसेंस फ्रॉम एनी गवर्नमेंट, दे विल विदाउट लाइसेंस दे विल वर्क एज ए कॉन्ट्रैक्टर, एंड 12 घंटे काम करेगा, मिनिमम वेज नहीं देगा, दूसरे कोई उसको चोट लगने पर कंपनसेशन नहीं मिलेगी, उसके किसी बच्चे आश्रित को नौकरी नहीं मिलेगी। इंटायर ये सारी चीजें इस सीलिंग को बढ़ाने से सब निकाल दी बाहर। और अभी इन्होंने उसमें कर दिया कि जो 100 एम्प्लॉइज की फैक्ट्री होती थी, अगर उसको क्लोज डाउन करना होता था तो प्रायर अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट वाज मस्ट, बट नाउ टुडे दे हैव इंक्रीज्ड द दैट सीलिंग फ्रॉम 100 to 300। और 300 एम्प्लॉय की फैक्ट्री को बंद करने से पहले कोई भी मालिक किसी भी एम्प्लॉयर गवर्नमेंट से कोई परमिशन नहीं लेगा। अभी गुड़गांव में जो फैक्ट्री है बिल्कुल प्राइम शहर में आ गई हैं, बहुत कॉस्टली फैक्ट्रियां हैं, उनको वो 275 करके और उनको बंद कर रहे हैं, और वो कहीं कोर्ट में भी नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि कोर्ट उनकी एप्लीकेशन को सुनता ही नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी रूल अमेंड हो चुके हैं पार्लियामेंट से। तो अब इस हालात के अंदर हमारे देश का जो कामगार है वो जस्ट लाइक जो अंग्रेजों का जमाना था उससे भी बदतर हालत में पहुंच चुके हैं। इसलिए आपके इस वेबिनार में मैं आप ये भी शेयर करना चाहता हूं कि ड्यूरिंग 1.5 ईयर एक कोविड के अंदर जो हालत हमारे देश की वर्किंग क्लास के साथ हुई है, वो मेरे ख्याल से पार्टीशन में जिन्होंने देखा होगा, उस टाइम पर भी जो गाड़ियां डेड बॉडियों की भर के आती थी, इस समय गवर्नमेंट ने खुद, पुलिस ने उनको बुरी तरह से मार मार कर लिटाया है। आपको मालूम है कि रतलाम के पास जब पुलिस मार रही थी तो ट्रैक से लोग घर जाने शुरू हो गए पैर, और जब थक गए तो सो गए, तो गाड़ियों ने रन ओवर कर दिया उनको उसको। और आज तक गवर्नमेंट के पास इतनी बेशर्म सरकार मैंने अपनी लाइफ में 45 साल के टेटू लाइफ में नहीं देखा। आज तक हमारा लेबर मिनिस्टर पार्लियामेंट में एक MP के रिप्लाई में बोलता है कि वी हैव नो डाटा बेस अवेलेबल, कि कितने एम्प्लॉय मरे हैं उस दौरान में कोविड-19 के अंदर। और ये अभी हमारे को पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ने बुलाया था और उन्होंने हमारे से पूछना चाहा कि कोविड-19 की वजह से कितनों की नौकरी गई है और कितनों के हाल खराब हैं, और कैसे जॉब क्रिएट की जा सकती है। तो उस स्टैंडिंग कमेटी में जब मैं बोल रहा था तो मेरे को बीच में कुछ बीजेपी के MP ने टोकने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि ये मीटिंग हमने बुलाई है आपसे सजेशन लेने के लिए, ना कि आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करेंगे।
मैंने कहा ये अगर इस तरीके का आपने आतंक और वातावरण बना रखा है कि आप किसी को सही बात रखने में नहीं देंगे, तो हमें बुलाया क्यों है आपने? अगर आप काज पे नहीं जाएंगे कि क्यों नौकरियां गई हैं, तो उसका इलाज क्या करेंगे आप? तो चेयरमैन ने खैर हमारा उसने ऑर्डर दिया, उसने रूलिंग दी कि आप इनको, मैंने कहा हमारे को 1.5 साल किसी ने पूछा ही नहीं। मैंने 3 लेटर प्राइम मिनिस्टर को लिखे हैं, हमारे 10 मजदूर संगठनों ने 4-4 लेटर लिखे हैं, प्राइम मिनिस्टर के यहाँ से एक्नॉलेजमेंट नहीं है हमारे पास। तो आज आपने स्टैंडिंग कमेटी 25 एमपीओ ने और चेयरमैन जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर है आपने बुलाया है, तो आपको हमारी बात सुननी पड़ेगी, नहीं तो अदरवाइज हमारे को आप कहिए कि हम चले जाते हैं वापसी। तो उस चेयरमैन ने कहा कि नथिंग डूइंग, आप बिल्कुल कंटिन्यू रखें, क्योंकि आपको 1.5 साल किसी ने सुना नहीं है। वी आर आल्सो गवर्नमेंट और हम डिफरेंट पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी है, आप अपनी बात को खुल के रखिए। तो उसके सामने हमने बताया कि 40 करोड़ एम्प्लॉय की नौकरी गई हुई है, आज भूखों मर रहे हैं। वो कोविड से नहीं मरेंगे, वो भूखों मर जाएंगे। तो इस वजह से इस हालात के अंदर जो हमारा ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन है, जो आपकी लीडरशिप ने जो एक बहुत ही बहादुरी का काम किया है, बहुत ही समझदारी का काम किया है कि 1 महीना लगातार पूरे देश को इस बारे में बताने के लिए, आगाह करने के लिए कि हम सिटीजन ऑफ इंडिया है और हम, हमारा देश है, हम काम नहीं रोकना चाहते हैं, काम को बंद नहीं करना चाहते हैं, पब्लिक सर्विस करना चाहते हैं, देश की सर्विस करना चाहते हैं। परंतु ये गवर्नमेंट है जो पूंजीपतियों की झोली में बैठी है, उनके इंटरेस्ट को वॉच कर रही है, उनको पूरा देश हैंडओवर कर रही है। आज 550 लाख करोड़ रुपए का मालिक बन गया है मुकेश अंबानी, कि कहां से धन आया कोई पूछने वाला नहीं है। आज गवर्नमेंट के खिलाफ कोई बोले तो उसके घर में ईडी आ जाती है, सीबीआई आ जाती है और दुनिया भर की इंक्वायरियां शुरू हो जाती है, अरेस्ट शुरू हो जाती है, परंतु इन महानुभावों के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा है। तो आपने ये लगातार 30 दिन तक, अभी 15 दिन और मेरा 15वां लेक्चर है, इसके बाद आप और सुनाएंगे इंपॉर्टेंट लीडरों को बुलाकर, 14 दिन और चलेगा ये बहुत ही एक आपने हिम्मत वाला काम किया है। और मेरे ख्याल से ये रिकॉर्डिंग आप जो कर रहे हैं इसकी, ये एक बहुत बड़ा दस्तावेज बन जाएगा। इट विल बिकम ए इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट फॉर अस। इसमें जो भी साथी पहले बोल के गए हैं, मैंने 1-2 को सुना है, उन्होंने बहुत ही अच्छे विचार इसमें रखे हैं और आपने हमारे को मौका दिया। मेरे ख्याल से मेरा टाइम, गुप्ता जी आप कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, पूरा हो गया मेरे ख्याल, कहें तो मैं, हाँ जी वी आर लिसनिंग, आप बोलिए। हाँ, बाकी ऐसा है कि हमारे जैसे ट्रेड यूनियन लीडर को तो मंच चाहिए, हमारे को समय का पता नहीं रहता है कि हम कितना बोलेंगे कितना नहीं बोलेंगे। हम उस जमाने के लीडर है जब बिना माइक के कम से कम 2-2 घंटे बोला करते थे वर्कशॉपों के ऊपर। तो हमें क्योंकि इश्यूज इतने हैं और आप ऐसा काम कर रहे हैं, ये मैंने अभी तक इंडिया में, ये मैं इसको मेंशन करूंगा सब जगह पर। कल लेबर मिनिस्टर ने बुलाया हमारे को, नया लेबर मिनिस्टर जो आए हैं भूपेंद्र यादव, वो हमारे से सुनना चाहते हैं क्या इशू है। उनको ये जॉब असाइन की गई है कि जो 4 कोड है इनको लागू करो। ये मेरा अपना मानना है कि कल एजेंडा वो डिस्कस करेगा कि 4 कोड को कैसे लागू किया जा सकता है। तो हम इसको 4 कोड को लागू नहीं होने देंगे। हमारी प्लानिंग है कि हम देश के अंदर रेलवे को, पोर्ट एंड डॉक को, सारे डिफेंस सेक्टर को, सारे कोल माइंस को, सारे बैंकिंग वाले हैं, सारे जो पब्लिक सेक्टर जितनी भी हैं, उसमें स्टील ने अभी हड़ताल की है अपने 1 दिन की, बड़ी सक्सेसफुल हड़ताल थी उनकी। अभी बीएचईएल हड़ताल पे जाने के लिए तैयार बैठा है। सारे पीएसयूज और गवर्नमेंट सेक्टर को इकट्ठा करके ये पेंडेमिक, अगर भगवान हमारा साथ दे दे, ये खत्म हो जाए, तो हम इस सरकार को ये सबक सिखाना चाहते हैं कि आने वाली सरकार को ये हिमाकत ना करे कि वो इस तरीके से देश के मजदूर और कर्मचारियों के साथ खिलवाड़ करे। हमारे देश की कमाई हुई खून और पसीने की एसेट्स को कौड़ियों के भाव में वो विदेशी कंपनियों को और चंद चुनिंदा उनके अपने वेलविशरों को हैंडओवर कर रहे हैं। ये ऐसी सरकार तो हमने कभी सोची नहीं थी और देश की जनता ने भी नहीं सोची होगी, और ऐसा मैंडेट भी इनको नहीं कभी किसी ने दिया। हमने कहा कि आपको मैंडेट है तो आने वाले चुनाव में ये एजेंडा बनाइए अपने मैनिफेस्टो में कि हम देश के सारे पब्लिक सेक्टर को बेचेंगे, सारे गवर्नमेंट सेक्टर को बेचेंगे, डिसेंट जॉब को खत्म करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट जॉब को क्रिएट करेंगे जहां पर 12 घंटे नौकरी होगी और मिनिमम वेज भी उसको मिलेगा नहीं, कोई मेडिकल फैसिलिटीज नहीं होगी, कोई उसको पेंशन नहीं मिलेगी, कोई। अभी इन्होंने डिफेंस में गुप्ता जी कह दिया है कि अगर आप कोई एम्प्लॉय, इफ एनी एम्प्लॉय रिफ्यूज टू वर्क ऑन ओवरटाइम, दैट विल ट्रीटेड एज अ स्ट्राइक, इलीगल स्ट्राइक, और पुलिस वाला किसी को भी विदाउट इंक्वायरी अरेस्ट कर सकता है। ये पूरी पावर दे दी उसको, और गवर्नमेंट को ये पावर दे दी कि अगर आप चाहें तो इसको और भी किसी सेक्टर में आप लागू करना चाहें तो अपने बिना पार्लियामेंट के, बिना ऑर्डिनेंस के कर सकते हैं। गवर्नमेंट को पावर दे दी।
और उसमें गवर्नमेंट ने कह दिया, उसको प्राइवेट एम्प्लॉयर के ऊपर भी लागू कर दिया कि कोई भी प्राइवेट एम्प्लॉयर अपनी फैक्ट्री के अंदर लॉकडाउन नहीं करेगा, किसी को फैक्ट्री बंद नहीं करेगा, और अगर वो करेगा तो उस एम्प्लॉयर को भी घेरे में ले लेंगे ये इलीगल स्ट्राइक के चक्कर में। तो वो उसके अंदर विदाउट इंक्वायरी डिसमिस करेंगे, जैसे हमारे को 74 में किया था, उस वक्त कोई इंक्वायरी होल्ड नहीं की थी, और अभी भी वो इसको निकालने का काम करेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि आप जैसे मजबूत ऑर्गेनाइजेशनों को भी साथ में लेकर, बैंकिंग एम्प्लॉय आपका जो हिस्ट्री है, जो आपकी बहुत मिलिटेंट है, बहुत दफा आपने हड़तालों पे गए हैं, विक्टिमाइजेशन होती है, फाइनेंशियल लॉस उठाते हैं, फिर भी हिम्मत रखते हैं, फिर भी दोबारा रॉन्ग डिसीजनों को चैलेंज करते हैं। परंतु अब ये टाइम ऐसा आ गया गुप्ता जी कि अकेला ऑर्गेनाइजेशन इस गवर्नमेंट को, जो 100% कॉर्पोरेट की गवर्नमेंट है, उसकी पॉलिसी को यू टर्न नहीं दे सकते हैं जब तक सारे देश का वर्किंग क्लास एक मंच पे नहीं आए। और हमने सिर्फ अभी 10 मजदूर संगठन हम पिछले 10 साल से लड़ रहे हैं, परंतु हमारे बीच में से बीएमएस हमारे साथ में नहीं है। बीएमएस जो गवर्नमेंट की अपनी ऑर्गेनाइजेशन लेबर विंग है, वो जब कांग्रेस पावर में था तब हमारे साथ था, तब तो सबसे फ्रंट लाइन पे रहता था कि बंद कराइए देश को। और अभी वो कहता है कि नहीं, हमारे को नागपुर से हुक्म है कि अभी इस गवर्नमेंट के, मोदी जी की गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बोलना नहीं है। वो और एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन हुआ, 2 आदमी बाहर हैं, बाकी 10 मजदूर संगठन। हमें खुशी है कि हमने ड्यूरिंग पेंडेमिक हमारी गिरफ्तारी भी हुई, अरेस्ट भी हुई, हमारे पे केस भी बने, हमने पार्लियामेंट पे प्रदर्शन किया, हमने लेबर मिनिस्ट्री पे प्रदर्शन किया, और उस दौरान पे हमारे खिलाफ सब 10 मजदूर संगठनों के लीडरों के, शीर्ष नेताओं के खिलाफ उन्होंने सीरियस केस डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंडर में दर्ज किए हैं। और हमने तो सारी जिंदगी कोर्ट केस देखी हैं, जेलें देखी हैं, तैयार हैं उनके सारे, इस मोदी जी के भी जितने काले कानून में जो सजाए हैं, जो उनके जो एफआईआर है, उनको भी फेस करेंगे। हमारे को गांधी समाधि से उठाकर ले गई। जब हमने देखा कि भाई देश में वर्कर के ऊपर लाठी चल रही है, हम 10 मजदूर संगठन वहां पर जाकर हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए, तो इन्होंने हमारे को वहां से पुलिस बुलाकर और वहां से अरेस्ट करा के हमारे को बंद कर दिया है इन्होंने थाने में लाके। और इन्होंने कहा कि नहीं, आप वहां पर कोविड जोन में बैठे थे, इसलिए हम आपको ग्रीन जोन में लेके आ गए हैं, लाकर राजेंद्र नगर थाने में हमारे को सारा दिन बंद रखा। और उसके बाद हमने जब ज्यादा प्रोटेस्ट किया कि आप हमारे को या जेल भेजो या हमारे को छोड़ो, तो शाम को 5, साढ़े 5 बजे हमारे 10 मजदूर संगठनों के नेताओं को छोड़ा इन्होंने। तो इसलिए हमारे को कोई चिंता नहीं है, हमारी सारी लाइफ जो है वो देश के आम कामगारों के लिए गुजरी है। ना हम इनके ईडी से डरते हैं, ना सीबीआई से डरते हैं, ना कोई इनके किसी एजेंसी से डरते हैं। हम ओपनली वर्किंग क्लास के साथ में आज तक पूरा डट के मजदूरों की ताकत के साथ लड़े हैं। और आप जैसी ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ रहती है ज्वाइंट मीटिंगों में, परंतु अगर हम ज्वाइंट एक्शन, अभी हम दोबारा मिलने वाले हैं, किसानों ने हमारे को ऑफर किया कि आप वो हमारे से मिलने वाले हैं 19 तारीख को, कि हमारे उन्होंने पार्लियामेंट का घेराव शुरू करने वाले हैं। तो वो कहते हैं कि किसान मजदूर मिलकर देश का, क्योंकि उनकी सुन नहीं रहे हैं, आज 7.5 महीने हो गए हैं और तकरीबन 800 जो किसान है मर गया है बॉर्डर के ऊपर, और उनके ऊपर क्या क्या चार्ज नहीं इन्होंने लगाए हैं कि वो खालिस्तानी है, वो टेररिस्ट है, वो एक्सट्रीमिस्ट हैं, और बाहर से फंडिंग आ रही है, और फिर उनको आपस में हरियाणा वाले पंजाब से लड़ जाएं और उनके खिलाफ यूपी वाले पंजाब से लड़ जाएं। दुनिया भर के इन्होंने जो साजिशें की हैं, परंतु मैं उनको बहुत ही मुबारकबाद देता हूं कि ऐसा मूवमेंट मैंने शायद अपने 45 साल की ट्रेडिंग लाइफ में देखा नहीं है। किसानों का जो मूवमेंट है, किस तरीके से वो लाखों देश के, हमारे दिल्ली के और हरियाणा में रहने वाले, यूपी में रहने वालों को खाना खिला रहे हैं। वो इस वजह से नहीं कि उनके भीड़ आती है, वो इस वजह से कि भी ये हमारे पास, हम किसान हैं, हमारे को बाहर से पूरी मदद मिल रही है, तो उसमें सब बराबर हैं। जो भी खाना चाहे वो, सुबह हमारे कई जानकार हैं जो दिल्ली में काम करने आते हैं, वो ब्रेकफास्ट भी वहीं करते हैं, लंच भी वहीं करते हैं, और डिनर भी जाके वहीं करते हैं। तो ऐसा मूवमेंट मैंने अपनी लाइफ में देखा नहीं है। और मैंने ये आपका AIBA का जो आपने सेमिनार का जो 1 महीने का चला है, ये बहुत बड़ा काम है, हिस्टोरिकल काम है। मैं फिर आपको पुनः आपकी लीडरशिप को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, और हिंद मजदूर सभा की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरे को मौका दिया अपने व्यू पॉइंट आपके पास सामने रखने के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद साथी। Wonderful, Harbhajan ji. So nice, so nice. We are inspired by you, and we assure you that in all the struggles of central trade unions, AIB and bank employees will be with you all in the common struggle. We support you and you support us. It's a mutual fraternal job that we are doing, and under your leadership,
with the help of all the working class central trade unions, we shall fight. And I know Kal Amara Hoga. That is our Vishwas. Definitely we shall fight and succeed. Thank you very much. Now I request Comrade Rajneesh Gupta to formally extend vote of thanks. Thank you, Venkatachalamji. Thank you. We are with you always. We are with you always. Thank you very much. Thank you, Ji. Thank you, Ji. Thank you. Yeah, Rajneesh. Mic on karo. All okay. Thank you, Comrade Harbhajan ji. Your deliberation was wonderful. आज वो याद आ गया 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं चिड़ियन थे मैं बात तोड़ाऊं तब गोविंद सिंह नाम का हूं. Oh, you are doing in that way, and really I am in close touch with HMS leader in Kanpur, Comrade Kuldeep Saxena. So I know the working of HMS, the Gandhian style of HMS. So whatever support you have extended us, whatever data you have given, and the feelings what were coming out of you were the feelings of a real trade union leader. And we hope with the support of trade union like HMS and leader like you, we will definitely be successful in preventing the government from privatizing the banks and other sectors too. Thank you very much to all. बहुत धन्यवाद गुप्ता जी, बहुत धन्यवाद. Thank you. धन्यवाद हरभजन सिंह जी, धन्यवाद. धन्यवाद जी, धन्यवाद राजन नागर जी, बहुत धन्यवाद आपका. धन्यवाद. Yes. And good evening, comrades. Now we are coming to the close with the announcement that tomorrow again 7 o'clock we have another very interesting session. The labor lawyer earlier, and then he became a High Court judge also, Justice Chandru. He will be talking to us tomorrow about the present condition of the labor laws in our country, where we stand with the labor laws. So it will be a very interesting session. He is highly experienced in labor laws, and with this also being a judge, that program will be very useful to us. So I thank you, and I request all of you to kindly cooperate and join tomorrow's webinar also, the same time at 7 o'clock. Thank you very much. With the permission of our President, Comrade Rajan Nagar, we are closing the program today. Good night.